Sometimes a little change is good, no? It gives you the opportunity to move ahead in life, to grow and discover, to reach new bolder milestones, while still holding true to everything you stand for. IDBI Federal has now changed to AGS Federal. It's the same old company, but with a bold new outlook. मुंबई में बैठ के कोलकाता से गुड़ का रसगुल्ला, आहा, यही तो जीवन। जस्ट माई रूट्स, लालच को पंख लगाओ, किसी भी शहर से खाना मंगाओ। Hello and welcome to a very important and interesting episode of Backstage with Boria. You know, it's interesting that 1 year back, this man was the toast of the country. Australia, it was him who won us that series. And I want to make that very clear. Huh? It was Ajinkya Rahane in Melbourne with that 100. It was Ajinkya Rahane in Sydney, in Brisbane, under his leadership with Virat back at home at that point in time. India won an incredible series. So just 1 year back. 1 year down the line, everybody is baying for Ajinkya Rahane. Oh, you know what, his career is over. Let's get him out of the test team, etc., etc. Is it fair? How does he react to it? He's not spoken. He's been silent. So this will be as candid as we can get. So Ajju, 1 year back, the darling of the country, 1 year later, career finished. You have seen it all, but how do you react to this? I just smile it because people who generally know the sport, they'll not talk like that. So I don't want to get too deep into it, but everyone knows it, you know it, what happened in Australia. Even after that, even before Australia, the contribution which I made, especially in red ball cricket, I don't want to talk about it, but Australia was really special. And as I said, people who know their sport, love the sport, they'll talk sensibly. But Ajju, ये बताओ यार, I mean, how can you say, I mean, when you've achieved that, to take away credit from you, for example, how can you, does it not hurt? आप बोल रहे हो that it does not hurt. I mean, you feel you are immune to this. You are human. I'm sure you read these comments. I'm sure आपको दुख हो रहा होगा, आपको खराब लगता होगा. How do you deal with that? मुझे पता है कि मैंने वहां पर क्या किया है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और वो मेरा that's not my nature. You know me really well. That's not my nature कि I'll go and take credit. Yes, कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने ऑन द फील्ड डिसीजन लिए थे या इवन ड्रेसिंग रूम में डिसीजन लिए थे, बट क्रेडिट उसका किसी और ने लिया. Important was for me that we won the series, and that was the historical series, and for me that was really special. लोगों के ये सब बाद में जो आने वाले रिएक्शन थे या जो क्रेडिट लिया था या जो बताया गया या जो मीडिया में आया कि ये हमने किया था, ये हमारा डिसीजन था, ये हमने कॉल लिया था, that was वो उनको बात करनी थी, बट फ्रॉम माय एंड आई न्यू कि मैंने ऑन द फील्ड क्या क्या डिसीजंस लिए थे और क्या मेरे इंस्टिंक्टिव डिसीजन थे या क्या कॉल था. यस, मैनेजमेंट से भी बात करते थे, बट अंदर से मुझे पता था, एक हंसी आती थी कि ये जो मैंने अंदर किया है, मैं कभी खुद के बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ या बड़ाई नहीं, बड़प्पन नहीं दिखाता हूँ.
बट अंदर ही अंदर मुझे पता था कि ये सब जो था किया था मुझे पता था. ये जो देखो, अब जब भी आप बैटिंग किए हो और मैंने आपका सारे इनिंग्स देखा है, whenever you have batted you have looked good. Yes, you have not been able to convert and be the consistent Ajinkya Rahane of 4-5 years back, 50, 60, 70, 100. How do you look at it? Do you look at it as getting good balls, getting set but getting out? Are you batting? Because see, one thing is to be able to consistently score, but one thing is, like Sachin Tendulkar keeps telling me, that it is also how you bat in the nets, that sound of the ball hitting the bat, because only the player knows if he is batting well or not. Hand on heart, Ajinkya Rahane, are you batting well? Are you confident of your own ability going forward? Yes, I am confident about my own ability. I am batting really well and I believe in my ability. And I still believe that I have good cricket left in me. So it's important. Is that important? Is that a statement that I'm absolutely still there for Indian cricket? Absolutely. For me, that's what matters. Playing cricket right now, Ranji Trophy is happening, which I believe is the tournament in our circuit, and it's good that BCCI they're taking the decision to go on with the Ranji Trophy so that everyone will get the match practice. And yes, I'm really looking forward to it. The other point I want to ask, and I know I'm asking you critical questions. ये जो press में आता है, paper में आता है about contracts and वगैरह, but आपने तो consciously red ball cricket को prioritize किया है देश के लिए. Isn't that something that should be recognized? Yes, absolutely. Red ball cricket is the ultimate format. Test cricket is the ultimate format. और सभी लोगों ने ये कहा है. मैं इससे पहले white ball cricket भी खेलता था. Unfortunately, I got dropped from white ball team. That was not in my hands. But again, focusing on red ball cricket since last 3 to 4 years. 2018 के बाद मैं white ball cricket नहीं खेला हुआ internationally. उसके बाद red ball ही खेल रहा हूँ. So red ball is the ultimate platform, ultimate thing to actually do something special. और वो आपने भी देखा है, इतने सारे टेस्ट मैचेस हम खेले हैं, हर एक सेशन में मैच चेंज होते रहता है, गेम चेंज होते रहता है. देन if you are back, you have to come back and then again build it on and then do something well for the country and for your team. So yes, red ball is the format. Even in South Africa, in that second test match, you and Pujara had that partnership, and at that point it looked to me that what an innings. I mean, that counter attack that morning, what an innings. Yes, 50 plus and both of you got out, we lost. But clearly, if somebody can bat like that, his skill is there. And can you tell me a little bit about South Africa? I mean, I ask these questions of myself, that if someone can get me 100 in Melbourne, someone can get me that 50 there, someone can get me a 50 plus in Lords, and again that partnership, you and Pujara, setting up that Lords victory. So clearly the skill is there. Everything is there. Bodha, the game is there. Everything is there. That inning, we thought the partnership between Pujara and myself, we thought that was the best partnership. We thought that runs on the board, they were chasing 240 plus on in the fourth innings, and we thought we had runs on the board to win that test match. But obviously, results यहाँ वहाँ होते रहते हैं, हार जीत होती रहती है. But that partnership was something special. Both of us were batting really well, and even in the first test match, the way I was batting, the way I was hitting the ball, the 48 which I made was really special. So yes, as I said, there's still cricket left in me. Ajinkya, if I can ask you, convert, because देखो आप खुद के बैटिंग का एक स्टैंडर्ड आपने बहुत ऊंचा सेट किया. अगर मैं लॉर्ड्स का 100 देखूं, मेलबर्न का 100 देखूं, साउथ अफ्रीका का वो जोहान्सबर्ग का 48 देखूं, मैच विनिंग इनिंग्स है ये सारे. सो जो कंसिस्टेंसी आप में है या था, why do you think the conversions are not happening? I'm sure you've thought about it, that the Ajinkya Rahane of the past getting more hundreds. Why? What is it? I mean, if you can make me understand, I'm sure you've introspected. What is your own thought?
See, I accept I'm going through a rough patch, and इस पैच से सारे cricketers गुजरते हैं, and I accept that. I'm not hiding behind it. I'm not running away from it. I accept it, and I know कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे मेरा गेम यहाँ से आगे लेके जाने के लिए what needs to be done. But sometimes what happens, Bulya, the reality is when you play only one format, और स्पेशली लास्ट 2-3 साल में रणजी ट्रॉफी या कुछ भी डोमेस्टिक गेम्स नहीं हो रहे थे. मैं यही पूछने वाला था दैट Domestic- आपने रणजी ट्रॉफी का अपॉर्चुनिटी नहीं था, आपके पास कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं था, आप व्हाइट बॉल नहीं खेल रहे हो. इजंट दैट समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट? एब्सोल्युटली, क्योंकि घर बैठे बैठे आपके रन्स नहीं बनेंगे. आप कितने भी प्रैक्टिस करो या कितने भी नेट सेशंस करो, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आगे जाएगा. कॉन्फिडेंस आगे जाएगा कि आप जब मैच में रन्स बनाओगे, मैच खेलोगे, आपके पास गेम टाइम होगा. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड उससे पहले आई वाज प्लेइंग ODI cricket for Indian team. I was playing continuously and I was doing really well. Suddenly I got dropped. I don't want to go into that. I don't want to go into my past. But reality is I was playing really well. If you remember 2014, 15, 16, 17, ODI cricket and my test cricket was going really well. So suddenly after getting dropped from ODIs, even I did well in South Africa series in white ball cricket, getting dropped in ODI. So उसके बाद hardly game time, मतलब टेस्ट मैच के बीच में बहुत गैप होते थे. And this is not an excuse, this is a reality. True, yeah. सभी को पता है. And because of also lockdown and बीच में गेम टाइम नहीं हुआ, तो जो कोई टेस्ट क्रिकेट सिर्फ खेल रहा है, सिर्फ कोई एक ही फॉर्मेट खेल रहा है, आप उनको देखो, तो गेम वो जो कॉन्फिडेंस आने में, मैच प्रिपरेशन आने में समय लगा है. ऑस्ट्रेलिया में व्हाई वी डिड वेल बिकॉज वी गॉट 2 first class games in Australia before the first test match, 2 4-day games. So obviously those game times really helps. Interesting point, very interesting point, because if I think back to the 11-12 Australia series, we lost 4-0. We did not get a single first class game. That Melbourne game was washed out because of rain and we got battered 4-0. If you fast forward to 2018, 2021, we got multiple first class games and look at the results. The results are for everybody to see. Absolutely. Now my point is, I'm sure you have, what is the kind of, Rahul Dravid as coach? He has been there, done that, Rahul, right? One of the greatest. He knows the ups and downs. He has also been through ups and downs. What is the kind of discussions you had? How was it to spend that? Because as a senior pro, you're a leader. You are a leader. I mean, people thought you will be captain of the Indian team. You captained the Indian team in the past. What is the kind of discussions you had with Rahul? So with Rahul bhai, it was very simple. See, Rahul bhai and I, we go back since Rajasthan Royal days. We played together. I played under him. Then he was our coach, mentor in Rajasthan Royals, and again he is with us in the Indian team. So discussions were completely simple. He told me to just back myself, back my game, and trust my ability. क्योंकि इतने सालों से हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, स्किल वर्क करते हुए आ रहे हैं, तो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट. सो वंस आई गेट स्टार्ट, देन इट्स ऑल अबाउट कन्वर्टिंग दो स्टार्ट्स. सो ज्यादा कन्वर्सेशंस मतलब नहीं हुए. इट वाज ऑल अबाउट, आई थिंक, कीपिंग इट रियली सिंपल. और राहुल भाई ने भी इसी के ऊपर फोकस किया था कि एज टेस्ट प्लेयर्स हमें कितना अगर मैच प्रैक्टिस मिल सकती है या कितने नेट सेशंस मिल सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका में जाने के बाद उतना समय नहीं था, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ कोविड रूल्स एंड रेगुलेशंस मैच प्रैक्टिस नहीं हो पाया, बट वी गॉट इनफ प्रैक्टिस. सो ही इज, उनको आइडिया है कि जो कोई एक फॉर्मेट खेल रहा है, उनको उनके प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए और क्या जरूरी है. आपने राजस्थान रॉयल्स का जिक्र किया अज्जू, दो आई वांट टू फोकस लार्जली ऑन रेड बॉल, बट फिर भी ये क्वेश्चन तो आता ही रहता है यार, ऑक्शन आ रहा है, क्या थॉट्स ऑन द ऑक्शन? योर थॉट्स? I mean, I don't talk about myself, but my IPL record is really good. You know that, especially for Rajasthan Royals. I played 7-8 years. Did really well. Last 2 साल में उतना गेम टाइम नहीं मिला मुझे, but I'm confident. For me, it's all about playing matches. It's all about playing consistently games in white ball cricket. So I'm just looking forward to that.
Yeah, I mean, I not for once would ever imply, because see, you've been around for donkey's years. The money after a point is not important. The all of that is peripheral. Yes, it feels good, but it is peripheral. For someone like you, it is important to be part of the leadership group and make contributions and feel good about yourself. Isn't that Absolutely. the reason? Absolutely. As I told you, I want to play cricket. This is my passion, and I want to give my best. So that is my priority. Whatever comes after that, it's not in my control. But I want to play games regularly, play matches regularly, and just keep contributing whichever team I play for. And IPL is the platform. You can express your talent, you can express yourself, and it is the biggest platform. So But I'm really now, looking Arjun, forward to the that. more important one for me, the Ranji Trophy. Nobody knows it more than you, perhaps, how important that format is, even for youngsters. Glad BCCI has resurrected it. Saurav Jai, they've got it back. So, once very important question: how important is Ranji Trophy to get India's red ball cricket in that zone again? Because clearly it has not happened for 2 years. So, your thoughts on that? Second question: going back to the basics again, as part of Mumbai, you will play, Prithvi will captain. Going back, you've captained India, but to go back to domestic cricket and play, your thoughts on that? First of all, I'm really happy that Ranji Trophy is happening, and as I told you that thankful to BCCI, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी करने का ये अपॉर्चुनिटी सारे प्लेयर्स को मतलब अभी मिलेगा. So I'm really thankful कि रणजी ट्रॉफी हो रहा है because of our BCCI. And going back to basics, as you said, इसी के वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ. 5-6 साल रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस करके, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके मैं यहाँ पर आया हूँ. सो बहुत बार होता है कि आप इंटरनेशनल में जाते हो और एंड देन सडनली यू कम बैक टू रणजी ट्रॉफी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट. वो माइंडसेट नहीं रहता है. बट फॉर मी इट्स ऑल अबाउट whatever cricket I play, whatever team I play for, it's all about giving my best, playing with that attitude. And I feel whoever is available, they should look to play Ranji Trophy. अगर कोई मैचेस नहीं है, शेड्यूल में कोई गेम्स नहीं है, they should look to play Ranji Trophy. अगर बड़े प्लेयर्स या सीनियर प्लेयर्स आके रणजी ट्रॉफी खेलेंगे तो इस टूर्नामेंट का और मजा आएगा. यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कह दिया, क्योंकि अगर सीनियर प्लेयर्स खेलेंगे तो जूनियर प्लेयर्स भी उनके साथ मिलके वो एक्सपीरियंस गैदर कर पाएंगे. आप ड्रेसिंग रूम में होना मतलब मुंबई का जो यंगस्टर्स हैं वो आपसे सीख पाएंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिकॉज आई हैव नॉट सीन, आई मीन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रिगर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, our best players have not been able to play Ranji Trophy, Arjun. In that sense, you and Pujara playing for Saurashtra and Mumbai is a very important statement. Your thoughts? Yes, I mean, whoever is available, they should look to play Ranji Trophy. See, it's tough nowadays क्योंकि हम लोग continuously क्रिकेट खेल रहे हैं, शेड्यूल इज सो बिजी. बट अगर कोई क्रिकेट नहीं है, अगर कोई प्लेयर इंजरी के बाद आ रहा है या कम बैक करने देख रहा है या अवेलेबल है, एक महीने के लिए कोई टूर्नामेंट नहीं है, देन दे शुड लुक टू प्ले रणजी ट्रॉफी, अगर उस वक्त ये टूर्नामेंट हो रहा है तो. यार, मैंने आपसे 18 मिनट बात कर लिया, मैंने कांस्टेंट गोली चलाया आप पे, एक क्वेश्चन के बाद एक. यार, कुछ अच्छे सवाल भी पूछ लेता. और आपने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया में आपने कुछ डिसीजंस लिया है, एक दो तो बताओ यार. कौन सा डिसीजंस यू आर स्टिल वेरी फॉन्ड ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू यू हैड अ टेलिंग इंपैक्ट? बिकॉज देखो, कैप्टन अजिंक्य रहाणे को हमने अकॉर्डिंग टू मी उतना सेलिब्रेट नहीं किया है, वो हमें करना चाहिए था. यस, वी सेलिब्रेटेड दैट सीरीज, बट शायद कैप्टन अजिंक्य रहाणे को सेलिब्रेट उतना नहीं किया है, करना चाहिए था. सो 2 or 3 decisions that according to you still remember with fondness, whatever you remember, whatever you want to tell. बोला था, I think the decision which I took in Melbourne, अश्विन को 9th ओवर में लाने का, that was completely instinctive, and that played off really well. Got Matthew Wade out and Steven Smith out in 2 overs, and वहां से गेम, मैं ये नहीं कहूंगा कि गेम सीधा हमारे पास में आया, बट हमें एक वो मोमेंटम मिला कि 2 विकेट जल्दी मिले वहां पर, एंड देन फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करके हमने उनको ऑल आउट किया. बट दैट वाज अ डिसीजन, दैट वाज प्योरली ऑन माय इंस्टिंक्ट, क्योंकि विकेट वाज लुकिंग डैम. जब फास्ट बॉलर्स डाल रहे थे 3-4 ओवर जब डाले उन्होंने, मुझे लगा कि अश्विन को यूज कर सकता हूँ मेलबर्न में,
यही वक्त है, क्योंकि एक बार विकेट अच्छा होने के बाद बहुत बहुत कम होता है कि स्पिनर्स को असिस्टेंस मिले. सो दैट वाज द डिसीजन. उसके बाद भी मतलब थे कॉल्स, बट सी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि दैट विक्ट्री वाज सो स्पेशल. मेलबर्न विक्ट्री वाज स्पेशल, द सीरीज वाज सो स्पेशल फॉर अस. सो मुझे वो टीम का क्रेडिट नहीं, मैं आपको क्रेडिट लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ. मैं आप दूसरा सवाल ये था, अश्विन वाज अ ग्रेट कॉल. आई मीन आई रिमेंबर मैथ्यू वेड डांसिंग डाउन द ट्रैक एंड देन दैट हाई कैच and beautiful, and then Steven Smith again beautifully bowled leg stump, leg side piche. But that fourth test, 7 players not there, leading a team with top 7 not there. Obviously the responsibility of the leader becomes that much more. How do you look back to that? So for me, it was all about keeping it really simple, not to worry about the result or what people will talk or what people are talking about us, कि ये टीम कैसी है, क्या करेंगे, क्या होगा ये टीम का. So it was all about giving our best. The message was completely simple. Just think about कि हम लोग रणजी ट्रॉफी गेम खेल रहे हैं या जस्ट एक क्रिकेट गेम खेल रहे हैं. Let's not think about we are playing against Australia. और ये ऐसा मौका मिला था सबको. किसी ने नहीं सोचा था कि ब्रिस्बेन में इतने सारे प्लेयर्स नहीं होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे या इंजर्ड हो जाएंगे. किसी को नहीं पता था कि डेब्यू कौन करेगा. बट एक ऐसा मौका मिला था हमें कि टू जस्ट गो आउट देयर एंड एंजॉय आवरसेल्फ, नॉट टू वरी अबाउट व्हाट विल हैपन और अबाउट द रिजल्ट और एनीथिंग. सो इट वाज ऑल अबाउट कीपिंग इट सिंपल. सबको कॉन्फिडेंस दिलाना मेरा काम था, सबको सपोर्ट करना मेरा काम था और बैक करना मेरा काम था. And I just did that. बाकी जो किया वो सारे players ने किया individually. But I thought because of that backing, that's what happened. And उसमें रोहित का भी support बहुत बड़ा था. थोड़ा सा बोलिए उस पे भी, because I mean the way I have seen Rohit, you and Rohit in that series or Rohit now, Rohit also has this ability to carry everyone together, which I think is one of his best hallmarks. Your thoughts on that? Yeah, absolutely. I think हम दोनों का एक तरीका कॉमन है कि हम we back each and everyone. हमारा एक ही मकसद होता है कि प्लेयर को उनका गेम खेलने दे, उनको सपोर्ट करे, उनको एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आप गेम खेलोगे. भले आप ये मैच में कुछ भी करो, आप फेल हो जाओ, रन्स करो, कुछ भी हो जाओ, आप ये मैच खेलोगे. उसके बाद भी आने वाले जो मैचेस है आप खेलोगे. अगर वो सपोर्ट आपको मिलता है, वो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है एक प्लेयर से, एक कैप्टन और सीनियर प्लेयर से, देन इट बिकम्स कम्प्लीटली डिफरेंट. और एक प्लेयर उसी के लिए देखता है जब आपका कैप्टन आपको कहता है कि आप खेलोगे, आप खेलो, बिंदास जाके खेलो, अपना गेम खेलो, फेल हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. अगर वो कॉन्फिडेंस मिलता है, देन इट बिकम्स कम्प्लीटली डिफरेंट. Ajju, you've got a young family. I mean, I was seeing your wife, and obviously she is involved. We've seen her in cricket grounds. You've got a young kid. All this negativity in the press, does it impact the family? How do they react? Because it's very hard on them. Must be hard on them because, all said and done, come on, yaar, you are also a family man. You're a human being. People calling names, etc., etc. Not for them. How do you sort of keep themselves immune to all this? No, I'm lucky that Radhika she is taking it really well. और उसको पता है कि how hard I am working, how passionate I am, and my work ethics and everything. She knows everything. So उसका support मेरे लिए बहुत बड़ा है, and she is keeping me in a positive state of mind. मैच से आने के बाद ऑफ द फील्ड वी डोंट डिस्कस एनीथिंग अबाउट दिस. एक्चुअली बात करें तो हम दोनों ने फोन से हमारा सोशल मीडिया कंप्लीटली ऑफ कर दिया है. सो वी डोंट रीड एनीथिंग. सो व्हाटएवर जो कुछ पोस्ट है, मेरी जो टीम है वो पोस्ट करता है. सो वी आर देयर इज नो इंस्टाग्राम, नो ट्विटर ऑन आवर फोन्स. सो एंड हर सपोर्ट इन एवरीथिंग means a lot, and she's been really supportive through my ups and downs. And उसको पता है कि मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा एटीट्यूड कैसा है. बाहर लोग जो भी क्या कह रहे हैं, जो कुछ बातें कर रहे हैं, सबको पता है कि वो किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है.
और ये सारी चीजें कैसी होती है, ये सारे लोगों को पता है. So then we don't have to think about that, discuss about that. As long as my attitude is right, my work ethics are good, my process are right, we are good. So you mentioned your preparation, Arju. Give me a sense, because I know from 2013 your debut match in Delhi, I don't think I've missed even one game. You have always worked the hardest. What is your preparation like now? Can you give me a sense of what you are doing in terms of training to get back to the Ajinkya Rahane of 2014, 15, 16? Right now it's all about focusing on my fitness. See, skill wise सालों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो अभी गेम में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा. छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, that's fine. But from now on it's all about fitness, focusing on my diet, my speed, my endurance, my agility, which I feel is really important. Game wise मेरे पास सब कुछ है, so it's all about starts को बड़े runs में convert करना और consistently करना, which I'm sure I will do it. So it's all about keeping my mind in right direction, focusing on right things, not to worry about results or outcome or get too greedy. Just as I said, keep focusing on the right things and focus on the process. Last two questions. You mentioned fitness. How important is mental fitness, and how have you dealt with that, Arju? Bubble life, COVID, getting stuck at home, playing one format. It must be playing on your mind, anybody's mind. I mean, all of us were chicken fried. What is there? I mean, everything comes to a standstill. No permission to go out and practice. Obviously, things have improved. But how have you dealt with the mental fitness aspect of it? So initially, when lockdown happened, no one knew आगे क्या होगा या कब प्रैक्टिस कर पाएंगे, कब घर के बाहर निकल पाएंगे. बट जो कुछ उस वक्त था, आई डिसाइडेड अगर बॉडी वेट ट्रेनिंग करना है, घर पे बॉडी वेट 2 सेशन करेंगे. मैं जाके ट्रैक, हमारा जो पार्किंग एरिया है, हमारे टेरेस है, वहां पर जाके आई यूज्ड टू रन फॉर एन आवर जब लॉकडाउन था. उसके बाद थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, परमिशंस मिले और हम बाहर जाके प्रैक्टिस करने लगे. सो वी आर ग्रेटफुल कि हमें क्रिकेट खेलने मिला लॉकडाउन कोविड के वक्त भी, और परमिशंस भी मिले प्रैक्टिस करने के लिए. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर फिटनेस. एज यू सेड, फिटनेस इज रियली इम्पोर्टेंट. Mental health is really important because of bubble and quarantine. So every time we travel for the series, we have to do 5 days of quarantine. Yeah. And it's not easy at all. लोगों को लगता है कि रूम में बैठ के easy आसान होगा या easy होगा, but it's not easy. अब बंद रूम में हो, जाके ग्राउंड पे जा रहे हो, खेल के वापस आ रहे हो थोड़े टाइम के लिए, it's fine. But this is happening since last 2 years. So it's all about आप उस एनर्जी को अच्छे तरीके में, अच्छे एनर्जी में कैसे इस्तेमाल करते हो, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कैसे कन्वर्ट करते हो, एंड आपके कंट्रोल में क्या है, आप उसको बेस्ट तरीके से कैसे यूज करते हो. आई एम जस्ट लुकिंग टू डू दैट इवन ड्यूरिंग क्वारंटीन एंड बबल लाइफ. Ajinkya Rahane, final question. Ajinkya Rahane, despite what is going on, the surround sound, Ajinkya Rahane believes, hand on heart, he's got a lot of cricket left in him for India. For sure. Excellent. I leave it at that. I will leave it at that because, I've been with you for the last 10 odd years. I've seen you grow. I've seen you become captain of India. I've seen you go through ups and downs. In sport, there'll be more failure than success, and that's how sport is. But as we said, I will follow your Ranji Trophy. I will follow your IPL. I will follow your practice sessions, because I too believe that this is a test, and you've always given tests and passed those tests, be it in South Africa in 2018 with that 48, be it in Melbourne after that 36, all out in Adelaide, be it in different parts of the world. So wish you all the very best, Ajinkya Rahane. Wish you all Thank the you very so much. best. Thank you so much. Wish you and Radhika all the very best. Anybody who's watching this interview, one thing you need to take from it: the effort, the preparation, the process, and the commitment. Not lacking. Back the man, and we'll see what results happen. Thank you very much, Arju. Thanks a lot for your time. Thank you so much. Thank you so much.